मैं आज आपको क्लास 10 के 5th चैप्टर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में कुछ फंडामेंटल नॉलेज देने जा रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस दो अलग अलग चीजें होती हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम एक तो कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड nth टर्म ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ सीरीज के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी लेंगे। एट फर्स्ट जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी मींस nth टर्म ऑफ एन एपी। an is equal to a plus n minus 1 into d, where a denoted by first term of an AP, d is denoted by common difference of an AP, and n is denoted by number of term of an AP. At first, what is AP? What is an AP? Suppose that 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. It is a series 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 2 plus 1 3 and 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8. अरे आने वाला टर्म अपने पहले वाले टर्म से 1 बेटर है, तो इट्स कॉमन डिफरेंस इज 1. D is कॉमन डिफरेंस. And common difference equal to second term minus first term, and n is equal to number of term of an AP. एट फर्स्ट स्टूडेंट में आपको सीक्वेंस के बारे में यहाँ पर बताता हूँ कि टर्म के सीक्वेंस को कैसे लिखा जाता है। एट फर्स्ट सपोज इवन नंबर इज 2, 4, 6, 8 and 10 and 12. It is an AP. It is an AP because the difference of two term is 2. Difference of two term is 2. 2 is a common difference. And second, suppose odd numbers come, sequence of odd number 1, 3, 5, 7, 9 and 11 and 13. This is also called AP because the difference of two term of first and second and third and fourth and fifth are same. The difference of two term is 2. So this is also called AP. And prime numbers means 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. This is not an AP because the difference of the two numbers are not same. So it is not an AP. It is not an AP. Suppose that 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Yes, it is an AP because the difference of two number is always 0. 2 minus 2 0, 2 minus 2 0, 2 minus 2 0, 2 minus 2 0, 2 minus 2. It is an AP. सीरीज ऑफ एन एपी, एपी की सीरीज हमारी होती है a plus d and a plus 2d, a plus 3d and a plus 4d and so on, a plus n minus 1 into d. This is first term and this is called second term and this is third term, this is fourth term, this is fifth term and this is nth term. Nth term of an AP is equal to a plus n minus 1 into d. So we at first term फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मिसिंग टर्म फाइंड करना है, हम मिसिंग फाइंड करना चाहते हैं, तो दिस इज और फर्स्ट टर्म a and this is a plus d and this is a plus 2d. ठीक है, इन क्वेश्चन में फर्स्ट a is equal to 2 and a plus 2d is equal to 20. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें टर्म कौन कौन से दिए हुए हैं।
आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2 एंड सेकंड टर्म आपको फाइंड करना है। सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म आपका है 26। ठीक है, थर्ड टर्म आपको दिया है। एट फर्स्ट आपको जो जो टर्म दिए हुए थे आप वो टर्म आप लिखेंगे। तो a is equal to and a plus 2d equal to 26. Putting the value of a is equal to 2 in a plus 2d equal to 26, we get 2 plus 2d is equal to 26 and 2d is equal to 26 minus 2 and d is equal to 26 minus 2, 24 divided by 2 and this is 12. The common difference is equal to 12 and the missing term is a plus b. Missing term is equal to a plus d and a plus d means the value of a is equal to 2 and the value of d is equal to 12. So the missing term of value is equal to 14 and you can check 14 minus 2 is equal to 12 and 26 minus 14 is also 12. So it is an 8. Now in question number second, हमें इस question number second में two missing term find करने हैं, this and this. At first हमें सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कौन से टर्म दिए हैं. This is first term and this is second term a plus b and this is third term a plus 2d and this is fourth term a plus 3d. तो हम a plus 2d यहाँ सेकंड टर्म जो जो टर्म दिए हैं आप उनको लिखिए पहले. a plus d इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 एंड सेकंड टर्म एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म इज a plus 3d. a plus 3d आपको दिया हुआ है 3 एंड सॉल्विंग बोल द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड. You can solve it. Minus 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 a and a cancel. D minus 3d equal to minus 2d equal to 10 and d is equal to 10 divided by minus 2. So d is equal to minus 5. The common difference is minus 5. And putting the value of d in equation first, we obtain a plus d is equal to 13 and putting the value of d is equal to minus 5. A minus 5 is equal to 13 and then a is equal to 13 plus 5 is equal to 18 and the missing term is first term a. So a is equal to 18 and third term a plus 2d is equal to 18 plus 2 into d is equal to, what is the value of d? Minus 5 and 18 minus 10 is equal to 8. So this is complete AP. 18, this is 18, 13 and 8. 13 minus 18 is equal to minus 5. 8 minus 13 equal to minus 5 and 3 minus 8 is equal to minus 5. The common difference are same, so it is an 8.